Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on Kurukshetra monthly compilation and I'll be discussing Kurukshetra for the month of March. Kurukshetra is something very important for civil services examination. It is helpful at the both stages, either it is prelims or mains examination. So let's get started with the this month edition of Kurukshetra. So for this month Kurukshetra, the entire journal focuses upon union budget. So this was a special issue for March, which give more emphasis on the union budget. We already had a discussion for YOJNA as well, जहाँ पे मैंने important article discuss किए. If not watch that video, do check it out. We'll start a session. Before I start, I just want to thank all our viewers, all our subscribers, that we have reached a family of 30K. Thank you for showing your support and trust to us. We always endeavor to give you a high quality content in our channel. So stay connected with us, and still those of you still being new to us, you can subscribe to our channel. That is Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. So starting with the first article of the day, that is growth and employment, something which is again important for the general studies paper 2 and 3. So after a serious economic repercussion that we have seen because of the COVID-19 pandemic and lockdown, India is finally getting to back on track. जो हमारी टारगेट थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उसको अचीव करने की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है. ऑल्दो दिस टारगेट वाज सेट फॉर 2024, राइट? दिस वाज सेट बिफोर COVID-19 pandemic. So due to this pandemic and lockdown, which has continued none less than 18 to 19 months, now government is looking forward to achieve the target of 5 trillion economy for India. Now, the COVID crisis was an urgent reminder for structural vulnerabilities that India has faced in many sectors. जितने हमारे core sectors थे, उनकी performance negative में रही. During the pandemic and lockdown, India was at the risk of decay of rising unemployment and economic stagnation. We have seen that almost lakhs of people have lost their job, and some still are in a condition where they are unable to sustain their livelihood. So these are the problem that has arisen because of the COVID-19 pandemic and some strict lockdown that was imposed in the different part of our country. Now, recovery roadmap की क्या बात की गई है budget में, that is again very important for you to know. So this union budget has set a stage for transforming India through Amrit Kaal. एक 75 year की जो इस टाइम पे हमने पूरा किया है, उसके बाद किस तरह से गोल होनी चाहिए अमृत काल की, वो बजट में उसको फोरकास्ट की गई है. द फर्स्ट गोल ऑफ अमृत काल इज completing the macroeconomic growth with microeconomic for all inclusive welfare. This is the first and foremost core idea, and the key to such transformation would be a technology driven approach. Definitely technology is something which is giving result that is for a short time within a less span of time. It can be achieved via advanced technology, foster innovation through structural reform. ये कुछ important broad categories of recovery रखी गई है इस बात के बजट में. Now, the budget has specifically highlighted some sunshine opportunities which include artificial intelligence, geospatial system and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceutical, green energy and clean mobility system. So these are some of the sunshine opportunities that budget has especially focuses upon. Now, minimum government or maximum governance की बात की गई. This is not new to India. This was already been pitched by many government, but the budget called for this principle where India would look forward for minimum government and maximum governance, which has already been a series reform that government has come up with. तो next stage की जो focus है, इसके जो advanced version है, इसके जो pro versions हैं, that is on standardization and removing overlapping compliances, complete digitalization of manual process and physical record. तो जितनी physical office operate करती हैं, सारे को digital करने की बात की गई है. Now, creation of single point access system and single window clearance system which will accelerate the business process and boost the productivity and industry. So this is how the thing will move ahead.
Now, government interventions की अगर बात करें, what are the efforts that government has made? So, improve access to credit for micro, small, and medium enterprises to accelerate India's path of 5 trillion economy. Because we cannot rule out the role of MSME. It's a very significant contribution. Almost 30% तक contribute करती है हमारे GDP में, right? 30% to the India's GDP. Now, the extension of emergency credit line guarantee scheme, this will definitely boost hospitality sector and related industries, and even the other scheme like credit guarantee trust for the micro, small and medium enterprises will serve to expand the employment opportunities in our country, because this section call for a lot more verticals where a lot more people are employed, right? PM Gati Sakti mission, again a very important and vital mission by Government of India, which endeavors for economic growth and sustainable development. That was still the focus point for this union budget. Now, PM Gati Sakti National Mission की अगर बात करें, ये जो master plan है that encompasses for 7 economic transformation, seamless multimodal connectivity और जो logistic efficiency इंडिया की उसको अचीव करने की कोशिश की गई है through PM Gati Sakti National Master Plan. Now, it will also help to raise productivity, accelerate economic growth, and the development in our country. So, the reform in 5 important areas has been specifically highlighted to improve productivity and increase competitiveness in this sector, which include sector-specific policies to improve productivity, चाहे वो manufacturing हो, real estate हो, agriculture हो या फिर retail हो. These points are again important for your mains. Enabling efficient power distribution to reduce commercial and industrial tariff by 20 to 25%, and privatization of the large scale owned enterprises to potentially double their productivity. तो ये कुछ ऐसे important steps हैं under PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो कि कोशिश करेगी इन सारी चीज़ों को अचीव करने की. Now, other lead article, that is agriculture development. In India, agriculture and allied sector almost call for 18.8% to the GVA, that is gross value added in the economy. This number is again important for you. ये कुछ ऐसे factual data है जो कि direct आपको official government sources से मिल रही है. Now, during COVID-19 pandemic, the agriculture was the least impacted in comparison to the many other sector. अगर आप बात करें कुछ और ऐसे sectors की, उनकी performance उतनी अच्छी नहीं रही, but agriculture was the only sector that has seen a positive growth of plus 3.4. So this is how the thing has worked for agriculture. Now, against in the pre-pandemic GVA growth rate was around 4.3% for 1920, और ये expect की जा रही है कि इस year this is going to be grow by 3.9%. Now, economic survey की कुछ recommendations हैं agriculture को लेकर के. So this survey highlighted the resilience to agriculture sector during the past 2 years. और सर्वे ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे एम्फेसिस दी है. फर्स्ट इंक्लूड नीड टू टाइमली एंड एडिक्वेटली अवेलेबिलिटी ऑफ रूरल एंड एग्री फाइनेंस. बहुत सारे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्रीकल्चर फाइनेंस को एड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. एक्सेस टू एग्री इनपुट्स एंड सर्विसेज, एडिक्वेसी इन इंश्योरेंस कवरेज एंड रिस्क मिटिगेशन, मार्केटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, crop diversification, advocating for gradual shift from cultivation of water, like जो water intensive cropping है उससे बाहर निकलना, जैसे sugar cane, paddy, cotton, horticulture, nutri cereals, pulses and oil seeds. So these are the essential thing that is required, and crop diversification in India is very important because farmers do not take call with regards to the crop diversifications. Now, pre-budget क्या expectations थी actual में? So the pre-budget anticipated the revival of rural farming. जो non-farm sectors हैं उनमें भी जो infrastructure या जो investment की push की जरूरत थी उसकी एक expectation रह गई इस budget से. The budget expectation was witnessed accelerating in the growth farming remunerative so that it can create a remunerative job opportunities and absorb a mountain labor force, because labor force is still strengthening but the work deployment for the labor is not there. जितनी labor की संख्या है हमारे पास उतने काम नहीं है. The reason being this is creating a mismatch. So the budget has specifically focused upon increasing the oilseed production, increasing productivity of nutri cereals and millets, increasing technological intervention which will call for a lot more updated technology, reducing in farm import, adaptation of chemical free and natural farming practices which already has been
अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर स्टेट्स लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिक्किम, इवन आप साउथ में बात करेंगे एक्सट्रीम साउथ में गोवा, वेस्ट में गोवा एक्चुअली, और भी साउथ में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो नेचुरल फार्मिंग विदाउट एनी केमिकल एंड फर्टिलाइजर शुड बी प्रमोटेड. Now, the objective behind these intervention is to guarantee the incremental income. जो farmer income है, जो employment opportunities हैं, उनको बढ़ाना, improving the agriculture value chain, और जो पूरी हमारी supply chain है, उसके पूरे purpose को serve करना, उसको improve करना. That is what the expectation, and especially the budget has actually focused upon this as well. Now, promotion of nutri-cereals की अगर बात करें, the Union government has underscored the importance of nutri-cereal like millet, which can meet the nutritional requirement of citizen. The budget has promised to provide support for post-harvest value addition that will enhance the domestic consumption, facilitate करेगी हमारी market development को. उसके अलावा जो millet based जो nationally और internationally market है वो भी promote होगी. So this is how the promotion of nutri-cereal will take place, and a roadmap has been clearly stated by the government. टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन इन एग्रीकल्चर, क्या कैसे टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है जिससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो. तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एग्रीकल्चर ड्रोन की बात की है. दिस विल हेल्प फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा. तो एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि गवर्नमेंट को मैनुअल लेवल से काफ़ी ज़्यादा रोकेगी. Now, Kisan Sarthi, a digital platform, this will improve farmer capability to negotiate and discover appropriate and just price and consolidate their product in both regulated and unregulated market. Now, the government has announced launching of scheme in the PPP mode for extension delivery of digital high-tech services to farmer through private agri-tech player and agri-supply chain stakeholders. Now, promoting agri-tech startup, if you are investing, if government is investing, स्टार्टअप हैज़ टू बी इंक्यूबेटेड. तो स्टार्टअप को प्रमोट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. द यूनियन बजट हैड अनाउंस दैट NABARD, that is National Banking for Agriculture and Rural Development, would fund some of the important scheme to promote agri-tech startup, जो कि फोकस करेगी डाइवर्सिबल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर के. Now, NABARD has to be blended in the capital funding, which will invest to financially support the agriculture startup and rural enterprises. Now, this initiative would provide assistance for enhancing the effectiveness and efficiency of agri products and value chains. So, this is how the agri startup is going to flourish in due course of time. Promotion of natural farming. This is again very significant. The budget has advocated for the promotion of chemical-free farming. Natural farming का यही मतलब है कि chemical free होनी चाहिए थ्रू आउट द नेशन. अभी कोई स्पेसिफिक लोकेशंस में की जा रही है तो इसको बढ़ा करके सारे लोकेशंस पे लाया जाए, पूरे इंडिया में प्रैक्टिस की जाए. टू बिगिन विथ फार्मर इन द लैंड ऑफ 5 किलोमीटर कॉरिडोर्स जो कि गंगा के रीजन के आसपास में हैं, उन जगहों पे खासा नेचुरल फार्मिंग या केमिकल फ्री फार्मिंग प्रमोट करने की जरूरत है. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेट अप विजन, राइट. एंड इवन परंपरागत किसी विकास योजना जो कि इंकरेज करती है हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग को या इंडिजिनस जो नेचुरल फार्मिंग है उसको वापस से इम्पोज करना, इवन फोकस और बढ़ाना. करेंटली 4.0 लाख हेक्टेयर हैव बीन कवर्ड अंडर द नेचुरल फार्मिंग. Now, digitalization of agriculture cooperatives की अगर बात करें, this here it aims to provide a hassle-free, cost-effective credit. मैं बजट की बात कर रहा हूँ जो टोटल एलोकेशन हुई है 350 करोड़ रुपीस टू डिजिटलाइज 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए, जहाँ पे टोटल ऑलमोस्ट 95,509 जो PSEs हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर जो कंट्रीज में उनके लिए. Now the scheme aims to have a computerization, that is a digitalization, functioning community, democratically governed, and the member of the cooperative would also enhance कि जो governance और operational part है उसमें efficiency आए. जैसे मैंने आपको पहले बताया, minimum government, maximum governance can only be aided once we incorporate the computerization and technology driven approach. तो अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स को जरूर फोकस करें, एंड यू हैव टू स्टेट दैट टेक्नोलॉजी कैन बी द गेम चेंजर इन ऑल ऑफ द सेक्टर दैट गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड विद. Now the other topic is transforming industrial ecosystem. So it has been 2 years that the world has seen the COVID-19 pandemic और इसकी manifestations, repercussions सारी चीज़ें इकोनॉमी में दिखी है, सारे सेक्टर्स में दिखी है. तो डिफरेंट इकोनॉमी ने अपने अपने तरह से चीज़ों को रिस्टोर किया है.
जो मॉनेटरी मैकेनिज्म है वो सारे कंट्री के लिए चैलेंज है, बिकॉज एवरी इकोनॉमी, द मेजर इकोनॉमी इन वर्ल्ड इज ऑन द रिकवरी फेज. So for this union budget, it has laid foundation for a long term vision. जहाँ पे गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि एक ऐसी अप्रोच क्रिएट की जाए जो लोग खासा वनरेबल थे उनको भी रिवाइव किया जाए. Economic survey states that India's GDP growth during 2021-22 was projected to be 9.2%. बट इसको बेसिकली इस साल के लिए 9.2% रखा. पिछले बार ये जब कोविड की सेकेंड वेव थी उस समय 7.3% के आसपास प्रोजेक्शंस थी, which is although on a safer side, right? So this is the highest projection among the largest economy. अगर आप 9.2% projection की बात करें current में, so this is among the largest in all the economies that is recovering across the globe. Now कुछ ऐसे important sectors हैं जिसके में डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है, that is micro, small and medium enterprises. So the Atmanirbhar Bharat package was announced in 2020, and this has a combination of components which was announced for the MSME, which include revision in the definition of micro, small and medium enterprises, facilitating the registration of MSME through Udyam portal. उद्यम पोर्टल के बारे में अगर आपको नहीं पता है, डू चेक इट आउट. एक पोर्टल है जो कि हेल्प करती है रजिस्ट्रेशन में MSMEs को. Now, making credit available through emergency credit line guarantee scheme. I have discussed this news a lot of time in our daily news analysis. If you've not watched it, do check it out. A special scheme for MSME with stress sector and scheme for equity infusions. Skill development, very important aspect of overall development for our country. The skill development programs की अगर बात करें, it is essential to benefit the demographic dividend in our country. तो बजट में एक स्पेशल allocations की गई हैं for the national skill qualification framework, which will launch the digital ecosystem for skilling the livelihood, जहाँ पे drone शक्ति is going to sync with the industry need as well. Infrastructure, again an important component in this. So the budget has recognized the investment to yield meaningful target returns. और जो गति शक्ति स्कीम है वो प्रपोज करेगी कम्प्रीहेंसिव एक्सपैंडेड रोड मैप को, जहाँ पे हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दी जाएगी. इवन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. Now the budget has also laid stress on public and private capital through PPP, right? जहाँ पे जो असिस्टेंस हैं वो भी होनी है मल्टीलैटरल एजेंसीज के थ्रू. Now, business facilitation, how to facilitate our business, that is again an important part. So the central government has proposed ease of doing business 2.0, where the state would be evolving और integrated approach रखी जाएगी for the current year. Ease of doing business का मतलब है जो भी इस तरह की bottlenecks है, red tapeism है, उसको हटाया जाए और hassle free process के थ्रू काम करवाया जाए. So expanding the प्रवेश पोर्टल, जहाँ पे ई-पासपोर्ट्स के लिए इवन द लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जो है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, एंड अडॉप्टिंग अ डिजिटल मीन्स ऑफ फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन हेल्पिंग द सिटीजन. फर्दर द बजट हैज प्रपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड एक्सलरेटिंग कॉर्पोरेट एग्जिट, जिसको CPS भी कहते हैं, टू ईज आउट द एग्जिट प्रोसेस ऑफ द कंपनीज. And even the budget has proposed that any income from the transfer of any virtual digital assets shall be taxed by the rate of 30%. So these are some of the things that was incorporated in this budget session. Investment, again a very significant. Economic survey has indicated that the gross fixed capital formation will grow by 15% and reach the pre-pandemic level. जो capital expenditure थी, that will enhance in the union budget for 2023. जो overall capex है, in short we call it capex, it is called capital expenditure, वो बढ़नी है, and it will strengthen the total outlay of the financial assistance to the state's capital, जो कि increase करके almost 10,000 करोड़ से बढ़ा करके 15,000 करोड़ तक कर दी गई. Now strengthening rural economy, this is another significant important topic that is going to help you for general studies paper 3 specifically and also in general studies paper 2. So strengthening of the rural economy holds a special significance in overall economic development of our country. And in India, nearly 2/3 of the total population reside in the rural areas. The major economical problem faced by the rural population are poverty, unemployment, and equality. So this is the three things that is creating a problem. यही एक ऐसी तीन चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन्हीं को रिमूव करने के लिए लगी हुई हैं. बट अगेन we have not achieved the success. Still poverty exists in India.
बोथ इन ऑल द स्टेट्स, चाहे वो रूरल में हो या फिर अर्बन में हो, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ रही है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी के लिए, अभी के कंटेक्स्ट में इंडिया के लिए इनएविटेबल है, राइट। नाउ बजट एलोकेशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, द नोडल मिनिस्ट्री विच टेक केयर ऑफ एंटायर फंडिंग फॉर द रूरल डेवलपमेंट, has provided the 7th highest allocation among all the ministry। तो बजट में जो फाइनल एलोकेशंस हुई हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जो पोजीशन है, टोटल बजट जो उनको एलोकेट की गई है, उसमें इसकी पोजीशन 7th है। सो द एलोकेशन हैज सर्ज्ड फ्रॉम 61,000 करोड़, एक रफली एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं आपको 2013-14 की, अब बढ़ करके 1,38,204 करोड़ हो चुकी है। Department of Rural Development, which account for more than 98% of the fund, has witnessed the growth rate of 10.56% per annum and allocations during the last decade. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, विल सी सम ऑफ देम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, जिसको मनरेगा भी कहते हैं, एक लाइवलीहुड ऑप्शन के लिए एक इतनी बड़ी ऑप्शन है जहाँ पे लोगों को 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस बार इसके एलोकेशन, जो बजट एलोकेशन है वो कम किए गए हैं 25% तक, बट फाइनली गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा करके 98,000 करोड़ रुपीस किया, बट स्टिल इट इज़ लैकिंग, राइट। ये एक्ट 2005 में आई थी, राइट, एंड इट कवर 716 रूरल डिस्ट्रिक्ट इन आवर कंट्री, and this is something considered to be the safest side for the livelihood option for all the migrant worker who have returned to their home। but again enrollment numbers almost double हुई हैं, but जो budget allocations है वो उसमें गिरावट आई है, and even for the wages that actually is being provided has not been paid to the laborers। और जो इसकी numbers हैं, जो daily wage की जो amount है, उसको लेकर के भी concern raise किया गया। so it has been asked that पूरे इंडिया में one pay होना चाहिए, one payout, one wage होने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना, this is something which is provided the second highest allocation in the union budget। It aims for affordable housing for the rural poor through financing assistance construction and developing unit। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलमोस्ट 80 लाख हाउसेस की बात कही है, दैट टू बी डिलीवर्ड बाय 2023, एंड इन सम स्टेट्स लाइक दिल्ली और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, this is the third most important scheme of the rural development because road connectivity is something which is essentially required to promote growth and prosperity in our country। तो core objective है to promote economic activities जहाँ पे all weather all purpose connectivity road बनाए जाए with the rural habitations, right, and the scheme has been allocated 19,000 crore rupees for 2023, nearly 14% तक की increase देखी गई है from the Department of Rural Development। Now, National Rural Livelihood Mission, again a very significant mission that was actually launched in 2011। इसको renamed किया गया दीन दयाल अंत्योदय योजना, that is National Rural Livelihood Mission, DAYNRLM भी कहते हैं। 2016 में इसकी नेम चेंज हुई थी, रीनेम किया गया इसको। And the mission aims to diversify gainful self-employment for the rural population, जहाँ पे सेल्फ लाइवलीहुड इन्हांसमेंट की कोशिश की जाएगी, एंड ऑल्सो इट विल कॉल फॉर इम्प्रूव्ड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। Now the scheme seeks to promote and strengthen the self-help group, which in turn will expected to mediate the livelihood of the poor people। So it is very important कि इस तरह की schemes हों जो कि livelihood को promote करे और जो self-help group है उनको भी strengthen करे। Now National Social Assistance Program (NSAP) is a welfare program which comprise many sub-schemes aimed at providing assistance for citizens। This is for the underemployed, old age, sickness, and any form of disability। This scheme was actually launched in 1995। So the major scheme under this program include Indira Gandhi National Old Age Pension, Indira Gandhi National Widow Pension, Indira Gandhi National Disability Pension और Family Benefit Scheme और अन्नपूर्णा स्कीम जो है। तो ये सारे मेजर स्कीम्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इनकम सपोर्ट टू फार्मर, इन व्यू टू सपोर्ट फार्मर, गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको पीएम किसान योजना भी कहते हैं, दिस इज समथिंग यू हैव टू राइट इन मेंस पेपर। अगर मेंस में सवाल पूछे जाते हैं तो आप इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखेंगे। इट वॉज लॉन्च टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर विद लैंड होल्डिंग ऑफ 2 हेक्टेयर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन्स। और ये पूरी स्कीम की पर्पस है टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द फैमिली, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनको एक ऐसा अमाउंट दिया जाए ताकि वो टेक केयर कर सके अपने एक्सपेंसेस की, and even occupational for the domestic needs as well।
The scheme under the government provides 6,000 to each beneficiaries in 3 equal installment for the eligible farmers. तो 3 equal installment में 6,000 रुपए उनको दिए जाते हैं सालाना. Now the other topic, that is accelerating tech transformations. So the Union Budget 2022-23 reflect a grand vision of self-reliance India, Atmanirbhar Bharat, which is a vocal for the entire pandemic era. Basically, अब बात करें इस time में. Budget has envisaged the transformative and representative thinking towards development, connectivity, infrastructure, innovation, and industrialization and growth. So, information and communication technology are being increased, referred as integral part of the government approach. Now, building digital infrastructure, how we can have the digital infrastructure, for that the government has some vision. So everything from agriculture to education to health to industry, the digital infrastructure will be promoted by the government of India. The government plan a roadmap to enhance a broadband connectivity, जो मोबाइल सर्विसेज हैं उसको बढ़ाने की बात की गई है. भारत नेट is an important scheme that is coming with the यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. मैं आपको आगे कुछ भारत नेट के बारे में और डिटेल में बताऊंगा किस तरह से उसको डिले भी की गई है. आई हैव डिस्कस दैट न्यूज़ इन आवर डेली न्यूज़ एनालिसिस एज वेल. नाउ भारत नेट, सो दिस इज बेसिकली इससे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हुआ करती थी जिसको रीनेम करके भारत नेट किया गया. एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की गई है रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, पंचायत में, टू गेट एट द अफोर्डेबल प्राइस और एक हाई स्पीड इंटरनेट उनको मिले. And this is the world's largest rural broadband connectivity project. This was supposed to be completed in 2025, but अभी recent में ministry ने clear किया है कि ये target को meet करना मुश्किल होगा and this would be extended further. तो ये आगे बढ़ेगी scheme. And the cabinet has approved the extension of BharatNet to 360,000 village among 16 states. And the cabinet has also approved the extension of BharatNet to inhabited village in the rest of the state and union territories. Now, innovation hubs, again important. So the center has come up with the startup to empower and transform the socio-economic phase, जहाँ पे यूनियन बजट ने ये सिंपलाइज करने की कोशिश की है कि इनोवेशंस जो हैं वो आए, आत्मनिर्भर भारत प्रमोट किया जा सके आत्मनिर्भर विलेज बनाने के लिए. And the vision makes for a rural India that increasingly become the focus for innovations and source for startup in small and medium-sized businesses. Kisan drone and vibrant village. So the union budget has put emphasis on the use of Kisan drone for various purposes in rural area. चाहे वो बात करें assessment की, crop assessment हो, land records, spraying of insecticides, micronutrients और agriculture sector. मैंने आपको किसान ड्रोन के बारे में भी पहले भी डिस्कस किया था, but here we are discussing in detail. So government has also launched Drone Shakti initiative which will facilitate the use of drone. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एस्टिमेटेड जो इंडियन ड्रोन सेक्टर की बात की है, जो टर्नओवर है दैट इज अराउंड 12,000 to 15,000 करोड़ रुपीस बाय 2026 और प्रेजेंट में दिस इज अराउंड 8 लाख करोड़ रुपीस. तो प्रेजेंट 8 लाख है, फ्यूचर में दिस इज गोइंग टू बी 12 to 15 lakh करोड़ रुपीस. एंड ड्रोन आर बिकमिंग पॉपुलर इन द फार्मिंग कम्युनिटी बिकॉज इट हैज limited cost and extensive utility and the easy to use as well. So these are the thing. इन लॉन्गर रन डाउन द लाइन 5 years के बाद आप देखेंगे किसान ड्रोन की बहुत ज़्यादा रीचेबिलिटी बढ़ी है इंडिया. नाउ नारी एंड युवा शक्ति, विमेन एम्पावरमेंट इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. विदाउट द comprehensive development of women, a society cannot progress. So India is among the top nation with the youngest population. जहाँ पे अगर median age की बात की जाए, we have a median age of 28 to 29. And at present 58% of the India's population is working with age group of 20 to 59. ये हमारी potential है, हमारी demographic dividend है. India has a double advantage both of women as well as for the youth power. Budgetary allocations की अगर बात करें 35.4% तक इंक्रीज की गई है. कैपिटल एक्सपेंडिचर में 7.5 लाख करोड़ रुपीस तक एक्स्ट्रा देने की बात की गई फॉर इकोनॉमिक एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू द वुमेन, राइट. And it has remarkably seen far-sight emphasis in building the social infrastructure and by focusing on children and women. So the budget precisely creates an enabling support structure for women and youth through the life cycle approach. Now, Nari Shakti, from foundations to employment, this is something which would be very important at this instances because women empowerment
call for a lot more efforts, and even the result is being witnessed by the society itself. So early child development, this is a policy which has come up. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें जो रिसेंट में आई थी, उसमें 85% चिल्ड्रन की जो क्यूमुलेटिव ब्रेन की बात की है, जो डेवलपमेंट है वो 6 ईयर में ही हो जाती है. हर एक बच्चे की एक मेंटल डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 3 years psychologically, and fully and fledged it is a 6 year. So this indicates the critical importance of appropriate care, nutritional and stimulus of the brain, and nearly in order to ensure healthy and brain development and growth. Now पोषण 2.0 गवर्नमेंट ने इसको भी इनहांस किया है, जहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम हैज़ बिन रिवैम्प्ड एंड एक्सटेंडेड. तो ये प्री नेटल स्टेज पे एक क्रिटिकल स्टेज है जहाँ पे ब्रेन की फर्टल डेवलपमेंट होती है बच्चों की. उस टाइम पे एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है. एंड दिस विल एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज ऑफ द प्री नेटल एंड अर्ली चाइल्डहुड, सपोर्टिंग मदर्स के लिए भी और बच्चों के लिए. The mission seeks to address the malnutrition in children, adolescents, pregnant women, lactating mother through a strategic shift in the nutritional content. Now, the focus area of the mission is on the maternal nutrition, infant, child, जो youth child है उसको किस तरह से feed करनी है, treatment for MAM and SAM in the wellness via Ayush mission. Now, making children school ready is another significant efforts by the government of India. So, according to the annual status for education report, ये बताया गया कि 30% of the children in India are school ready, but nearly 43% ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास 1 में भी चीज़ों को अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो काफ़ी लेस है. सो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ एम्फेसिस ऑन द रोड मैप, जहाँ पे प्री स्कूलिंग पे खासा ध्यान देने की बात की गई है. द यूनियन बजट हैज़ टेकन अ लीप फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन वेर इट विल क्रिएट 2 lakh Saksham Anganwadis in this country to impart the basic literacy skill to the primary students. High quality school educations की भी बात की गई है. We have seen that during COVID-19 digital divide was inevitable, और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो डिजिटली एक्सेस नहीं कर पा रहा था कंटेंट को. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिन्होंने सारी फैक्ट्स को कंसिडर की. एसआर के रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया कि यस एक्चुअली डिजिटल डिवाइड है जो इंडिया में कंपाउंड कर रही है. डिजिटल डिवाइड की जो गैप है वो बड़ी है. सो दिस इज अ बिग बेसिकली एक्सेप्टेंस कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड पीएम ई विद्या, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एफर्ट्स किए गए हैं चीज़ों को ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करने में. डिजिटल टू ईयर सर्विसेज विल एनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन पैन इंडिया. राइट, अब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको ख़त्म की जा रही है और गवर्नमेंट इस तरह के एफर्ट्स के साथ जो डिजिटल ऑन ईयर एजुकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है. बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगेन ऑलमोस्ट वी हैव सीन दैट द एम्प्लॉयबिलिटी हैज़ इंक्रीज टू 37.22% फ्रॉम टू 45.9%. पहले ये 37.22 थी, अब ये बढ़कर 45.9% हो गई है. बट स्टिल द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई इन आवर कंट्री. तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ वर्क किया है, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में बच्चों के स्कूल पे ही ध्यान दिया जा रहा है. एंड द बजट हैज़ पुट एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड वोकेशनल एजुकेशन एज वेल. एंड इट हैज़ प्रपोज्ड ऑलमोस्ट 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस, मैथमेटिक्स and 750 skilling lab that to be stimulated environment will be set up during the 2022 and 2023 itself. तो इतनी numbers establish करने की बात की गई है इसी साल. Now, strengthening agri-entrepreneurship. This is again very important because agriculture में जो entrepreneurship है उसकी महत्व काफ़ी ज़्यादा है, and in a longer run this can be the game changer. So agriculture continues to be the major source of livelihood in rural economy, जहाँ पे intense prolonged lockdown देखी गई. But this was a sector which has substantially growth a little bit, negative growth यहाँ पे नहीं दिखी है. So it has created sustainable livelihood option, entrepreneurial avenues, youth, women और marginalized section of society के लिए. Agriculture is contributing to around 20% of our national GDP. Now, entrepreneurship development की अगर बात करें, entrepreneurship development in agriculture and allied activities has ensured sustainable livelihood, जहाँ पे employment opportunities भी create हुई है during this pandemic. And agri-entrepreneurship, food processing value chain has developed, also encouraged the youth to come into the agriculture sector, which was considered to be the neglected sectors, right? So it is a time that government should increase public investment on crucial agriculture infrastructure, including irrigation, storage, market linkages, modernizations, even mechanizations की अगर बात करें, inter-rely and enable a high value agriculture food chain and even the overall development of this.
नेशनल स्टार्टअप डे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि 16 जनवरी को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि हम नेशनल स्टार्टअप डे को सेलिब्रेट करेंगे टू स्ट्रेंथन द इनोवेशन एंटरप्रेन्योरियलशिप और startup ecosystem. It also envisages to liberate the entrepreneurship innovations from government processes, bureaucratic silos, जो एक problem है इंडिया में, still to create an institutional mechanism and promote innovation in the entire country. So National Startup Day is aimed to strengthen, to motivate the people who is actually building up the startup in our country, be it in any sector, चाहे वो agriculture हो, fintech हो या किसी भी तरह के sectors हो. Now, area that need specifically focus is simplification of the tax procedures, removal of more than 25,000 compliances, arranging the government funding, hand-holding for the young innovation and young enterprises, and making lives for entrepreneurial easy. So this is what the focus should be there, and government is endeavoring, but again we have to achieve this in a very short span of time ताकि जो final इसके full-fledged flourish result है वो जल्द से जल्द दिखे. Now, provision under the union budget, adequate emphasis दी गई है for digital infrastructure, चाहे वो agriculture technologies हो या फिर public private partnership के मोड पे काम करने की बात हो. Promote chemical free natural farming, as I have discussed in detail. तो natural farming तभी होगी जब हम इसको फाइनेंस भी करेंगे और नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट भी करेंगे. किसान ड्रोन्स मैंने आपको बताया, क्रॉप असेसमेंट होगी, लैंड रिकॉर्ड होंगी, इंसेक्ट को स्प्रे किया जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को स्प्रे किया जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगी. Digitalization use of agriculture records and coupled with the high-tech services to enhance the rural entrepreneurship. Now, measures that was proposed by the government. The government ने क्या-क्या measures लिए हैं? First is incentive of agri business startup will benefit the overall agriculture sector. Provision of funding through NABARD for the agriculture startup and rural enterprises. Multiple exemptions किए गए हैं for rationalization tool and agriculture sector that will manufacture in India. Focus on millets and increasing on domestic productions and oilseeds. So these are some of the major proposed, basically, you can say efforts that has come from the central government. And programs and scheme, in light of that only, we'll see some program and scheme as well. So RKVY Raftar, this is remunerative approach for agriculture and elite sector, जहाँ पे यूनिक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की फार्म वेलफेयर के लिए. एक कोशिश है टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर लीड सेक्टर में, जहाँ पे एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, फिनेंशियल सपोर्ट दी जाए. अगेन दिस एफर्ट्स वर मेड टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू ऑल एग्री बिजनेस एंड स्टार्टअप. दिस इंक्लूड कैपेसिटी बिल्डिंग, बिजनेस प्लान, पर्सनलाइज्ड मॉनिटरिंग, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी गाइडेंस टू सपोर्ट द IPR एंड पेटेंट राइट. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो पेटेंट्स हैं, उनको भी सिक्योर करना, सेफ करना. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, दिस इज अगेन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जिसकी कोशिश है टू क्रिएट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस ग्रुप एंड अगेन जो खास करके फार्मर्स प्रोसेसेस मार्केटेड है, वेल इक्विप्ड सप्लाई चेन, उसको प्रमोट करना. प्रोवाइडेड इंटीग्रेटेड कंप्लीट प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल फैसिलिटेट फार्मर गेट टू द कंज्यूमर्स एंड इवन क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन फूड प्रोसेसिंग दैट इज क्लोजर टू द प्रोडक्शन एरिया. PMFME scheme. PMFME basically is the formalization of micro food enterprises, which aims to provide technical support, upgradation of existing micro small enterprises. और ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी अपग्रेड करने की बात की गई है विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ GST, फसाई, हाइजीन स्टेटस एंड उद्योग आधार. And under the scheme, skill training and hand holding support would be provided from the central government, चाहे वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की बात हो, एंड इवन the FPOs, SH and the PCs would formalize to grow. So this is how the PMFM scheme is going to work. Now student ready, this is to promote agri entrepreneurship in youth, which is like rural enterprises awareness development YOJNA. READY stand for this, and the program is implemented by Ministry of Agriculture and Farm Welfare. So this student ready program called for experimental learning with the business model, hand holding on training and in skill development, rural awareness work experience, intern in planting and industrial attachments. Also, the student project would be the part of student ready program. Agri clinic और agri business centers, जहाँ पे स्कीम एम करती है टू प्रोवाइड सपोर्ट एक्सटेंशन
with all other schemes जहाँ पे local entrepreneurship, local needs, affordability को बढ़ाया जाएगा, and it aims to create employment opportunities for unemployment youth as well. So under the scheme, the government is now providing startup to agriculture people who have devoted their time in agriculture, any subjects, चाहे वो horticulture हो, sericulture हो, veterinary sciences हो, forestry, dairy, poultry, farming और fisheries, सारे sectors को promote की जाएगी via agri clinic and agri business center scheme. So this was all about for the Kurukshetra this month. We have a lot more other initiatives, that is daily news and editorial analysis, IAS GAZETTE, FCA, और जो पूरी डिस्कशन हमने की है कुरुक्षेत्र की उसके PDF आप हमारे आइस ज्ञान के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. So you can check out this all initiative that will definitely help you to sail through the journey of civil services. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.